The most hurtful thing somebody has ever said to me was that I deserved being cheated on. एक तो जब ये चीज़ हुई थी तब I was already like going through the stress and like I was not able to accept that I was being cheated on. क्योंकि this was the time when I was too much invested in the relationship और मुझे लगा था कि यार ये आदमी तो perfect है मेरे लिए. And then when I got to know that somebody that I trusted more than my instincts was someone to hurt me the most, I was not able to process this information. And that was the time a girl came to me and she told me that Vanika, ये तो होना ही था. You deserved being cheated on because you can't satisfy someone sexually. It's because I have this problem called vaginismus, जिसमें I can't go through penetration. और I never thought of it as something that was a problem until this girl said that to me. And what I was more hurt about was कि यार this was coming from a woman to another woman who understands कि हम लोग कितने insecure या फिर कितने overthinkers होते हैं. So she did not just say it to say it, she said it as if she meant it. And even though I knew that this was bullshit, but still when somebody says it at that point where you are vulnerable, it gets to you. So yeah. The most hurtful thing someone has told me is that I am the reason my father died early. जब आप सोशल मीडिया पर होते हो और आप एक पब्लिक फिगर होते हो और आप अपना आर्ट उस प्लेटफॉर्म पर डालते हो, आर्ट इज़ सब्जेक्टिव एंड सबके पास अपना राइट है उस आर्ट के बारे में कमेंट करने का. बट एट टाइम्स व्हाट हैपन्स इज जो ट्रोलिंग होती है वो आर्ट से पर्सनल पहुंच जाती है. जनरली मुझे कोई भी कमेंट या कोई भी बात अपनी राइटिंग पर, अपने क्राफ्ट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ठीक है वो उनका ओपिनियन है विच आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट. बट जब बात पर्सनल पहुंच जाती है तो हर्ट होता है, स्पेशली जब आपके वो फादर के बारे में हो जो विच हु वाज द मोस्ट डियरेस्ट टू मी. तो मुझे याद है उस वक्त भी जब मैं वो कमेंट बार बार पढ़ रहा था तो अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस हो रहा था कि आपका जो भी ओपिनियन, आपको जो भी कहना है वो मेरे बारे में कहिए, जो जिंदा भी नहीं है, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, उनके बारे में कहकर क्या मिलता है. सो दैट वाज समथिंग दैट रियली हर्ट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. There was this guy I met in college, and we actually became friends towards the end of second year. We were put for a project together, and हमारी वैसी बातें शुरू हुई और फिर हम दोस्त बन गए और फिर धीरे धीरे we realized कि we have feelings for each other, and we confessed and we started going out. एक आध महीने के अंदर he came and told me that he wants to be just friends, and although it was hurtful, I was like ठीक है, because obviously you can't force someone to be with you, right? So we started being friends, लेकिन ना फिर भी उसका behavior वैसे ही रहता था. अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो he would hold my hand and he would say all of these nice flirty things to me, and initially I was confused again, but I eventually reciprocated because मेरे को पसंद था वो. तो I was like ठीक है, maybe he's confused, तो why not? And then when I actually started showing love again, I started giving him attention again, he said something very mean to me. उसने मेरे को मैसेज किया और बोला कि मैं बहुत ज़्यादा चिपकू हूँ or I should understand boundaries and that I don't have self-respect because although he has told me he wants to be friends, I'm doing this, and it was very hurtful. तो मेरी 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो उर्दू मीडियम में हुई है. हमारे जितने भी जो सब्जेक्ट होते थे वो सारे उर्दू में होते थे और घर पर भी जो है हिंदी और उर्दू का माहौल था. बात ग्रेजुएशन की है कि मुझे बीएमएस करना था और बीएमएस में हमें काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस देना होते हैं. तो उन्हीं एक प्रेजेंटेशन के वक्त की बात थी कि मैं स्टेज पर था, मैं प्रेजेंट कर रहा था और मेरी प्रोफेसर ने मुझे बीच में रोका और कहा कि आप अच्छे से जो है इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, आप नीचे उतर जाइए. और मुझे प्रेजेंटेशन के बीच में से उन्होंने मुझे स्टेज पर से उतार दिया. एंड दिस इज़ द मोस्ट हर्टफुल थिंग जो आप पूरी क्लास के सामने किसी बच्चे को बोल रहे हो, आप जो है किसी का कॉन्फिडेंस हर्ट कर रहे हो. और उस साल जो है आई वॉज नॉट एबल टू गिव एनी प्रेजेंटेशंस, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो बिकॉज
सारी क्लास के सामने रिडिक्यूल किया है। वो जो हर्ट था, आई हैव ऑलवेज कैरीड विथ मी कि आप जो है उर्दू मीडियम से पढ़े हो बट आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो यू फेल्ट दैट कि आप कहीं ना कहीं जो है कमी हो रही है आपके उसमें, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बातचीत में, और आपकी जहानत पे भी उंगली उठाई गई। सो दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। I've been a class topper since kindergarten to 11th grade, and honestly, I've never cared until 12th grade when my father walked into my room and he said that, Asmita, you need to get into SRCC this time. I know you've never scored more than 95%, but I want you to work towards a 98%. I know that's a lot of marks, but for the first time in my life, I was very optimistic and motivated to actually care about marks and work towards them. The day I got results, I was looking at the website, the CBSE website, and I scored a 96%. And I've never scored more than 95%, so I was on cloud 9. And then my teacher called me saying that, Asmita, not only you scored 96%, but you've also topped in the entire school. And I was super excited. I called my dad and I tell him, Papa, result aa gaya hai. And my papa was like, kitne aaye? Bola 96. And then he said that, bas itne hi. So I took a pause for a moment. I looked at my mom क्योंकि फ़ोन स्पीकर पे था. मैंने बोला हाँ लेकिन मैंने स्कूल टॉप करा है, पूरा स्कूल, सारे स्ट्रीम्स में. And my dad was like, yes, but तू SRCC तो नहीं जा रही ना, फिर क्या? And that was the moment I realized that, okay, maybe I've scored 96%, but I've actually failed in making my father proud when it actually mattered. And yeah, that was the most hurtful thing anyone has ever said to me. पापा को डिसअपॉइंट करके मुझे बुरा लगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा. लेकिन ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि अपने पापा को या अपनी मम्मी को डिसअपॉइंट करना is not a very difficult thing to do. It's very easy to disappoint them, but the fact that I let that affect my happiness, my confidence, is the one where I was wrong. So उस दिन के बाद से मैंने हमेशा खुद की एक्सपेक्टेशंस मीट करना, खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना प्रायोरिटाइज किया ओवर डिसअपॉइंटिंग माई फादर और माई फ्रेंड और माई मदर, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द ओनली पर्सन यू नीड टू इम्प्रेस इज योर सेल्फ. After that incident, I started working on myself, on my communication skills, and now I can speak in the language. And I'm a copywriter now. I am also writing blogs and all that thing. I'm a content writer. So the thing is that the languages that you know doesn't define anything, of the content that you have inside. But it's just an additional skill, I feel. On the basis of the languages that you speak doesn't define who you are or how your ideas and your mentality and perspectives are, basically. So it should come as a, as an add-on thing that, okay, so so and so languages, but should not be ridiculed in any way that you can't speak certain languages, or you can't speak English for that matter. Like, I can speak right now 3 languages. I can speak Hindi, Urdu and English. So this is what it is, basically. So whenever I think I go back to this incident, I feel that, okay, that was like a moment for me. It was very hurtful, but it has taught me that, please keep working on yourself, and the more you work, the more you realize that you're adding a lot of things to your personality, to your life, and it will always improvise your skills and you in general. So this is what it is. This is something that I realized right now. I spent a lot of years feeling bad about that incident. It stopped me from loving people the way I wanted to, because I always felt that I might overstep, that I might be a little too much. I didn't want anybody else to call me chipku or say that I don't have self-respect. And I recently found out that he has had a pattern of doing this. He did that to a couple of classmates, a couple of college friends, and this just made me realize that बहुत बार ना हम अपने सेल्फ वर्थ इस पे डिसाइड करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड इट्स नॉट फेयर. योर सेल्फ वर्थ शुड कम फ्रॉम व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड आई विश दैट हूएवर इज वाचिंग दिस, आई होप यू डोंट वेस्ट मोर टाइम इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज समबडी सेड समथिंग मीन टू यू. आपको दर्द कोई तभी पहुंचा सकता है जब आप किसी को आपको दर्द पहुंचाने का हक देते हो. सोशल मीडिया पर कई सारे लोग होंगे जो आपके बारे में अनशन बातें करेंगे, आपके परिवार के बारे में अनशन बातें करेंगे, पर आपको वो सारी बातें इग्नोर कर लेनी चाहिए क्योंकि वो मैटर नहीं करते.
उन्हें वो 1 सेकंड का फेम, 1 सेकंड का वैलिडेशन मिल जाता है कि उन्हें लगता है कि वो बड़े कूल हो गए हैं पत्थर मारकर, बट एट द एंड ऑफ द डे वो इट्स जस्ट वाइट नॉइज. तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप जो हो, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्रू टू who you are, to the people that matter on social media. I think that's the only thing matters at the end of the day. The rest of the people are just are dogs barking. इससे मुझे सीखने को ये मिला, पता है, इवेंचुअली, कि हमारी सेल्फ वर्थ या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर सेल्व्स कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्सेस वर्ड्स. मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हूँ जो लोग कहते हैं उसके ऊपर फॉर द वे आई फील अबाउट माई सेल्फ. मतलब आज अगर कोई मुझे बोल देगा ना कि वनिका यू आर द बेस्ट, आई विल फील द बेस्ट. एंड इफ समबडी सेज दैट टू मी कि वनिका आई थिंक यू आर नॉट गुड इनफ, it will also get to me. So I get very affected by the words people speak to me. But when she said that to me, I understood that my self-worth cannot be dependent on someone else's word, and I need to know my truth. And if I know my truth, then no matter what people say, I need to stick by the one thing that I believe about myself. तो हाँ, कोशिश कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि सीख लिया है तो अब फॉलो भी कर लेती हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग.